Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum student. Today we will going to discuss the content from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. Today what we will going to discuss is about our own national curriculum. So in the last discussion session, I gave you a recap about whatever you have gone through in 2 weeks, in the last 2 weeks, and those were about the definition of the curriculum, about the forms of the curriculum, about the elements of the curriculum, how to do the need assessment for the curriculum, and then what you've gone through is about the psychological and philosophical foundation in the curriculum. So, in the last discussion, I tried my best to recap everything for you and integrate them together and try to make a single sense out of them. So, before going ahead, I think that it is good to at least look at a real curriculum, that how all of these components actually display in a real curriculum. That's the reason for this session. I decided to take national curriculum for English and national curriculum for science for you. What we will going to do it, we will going to give it a look to them and try to find out all of those stuff that you already been read in the last 2 weeks. So there is an important question here. It is that why I have taken curriculum for English and why I have taken curriculum for science. There is no big reason behind it. So you can download any of the curriculum that you want to from the internet. All of our national curriculum, they are available free on the internet. So what you can go and do is you can just Google them and browse them, and you're going to find out it's PDF document that you can easily download into your computer. And if you want to, you go through it and see that how they look like and what this national curriculum document is talking about. So before moving ahead, I want to just give you a recap where we ended in the last lecture, in the last discussion. That, like, take example in Pakistan. In Pakistan, we are not actually teaching from the national curriculum to all of our children. In Pakistan, we have two different kinds of school system. The one is public sector, the other is private sector. In all of the public sector school, actually they are guided by the national curriculum of Pakistan. In some of the private school or in many of the private school, they also are teaching whatever they are getting the guidelines from our national curriculum of Pakistan. But there are few private schools in which they don't teach our national curriculum. And I have given you the example last day. It was like, take an example of madrasa schools. They are not in fact teaching the national curriculum. Not all, but most of them. And there are so many other schools, like in so many schools, schools are taking curriculum from the Oxford, from the Cambridge. They are taking Ivy curriculum, or there are so many private universities who are developed their own curriculum, and their registered school are teaching those. Let's take an example. It is an example of Aga Khan University have its own curriculum, and the registered school with the Aga Khan, they actually take all of the guidelines for teaching and learning material from the Aga Khan University curriculum. But for today, we will give a look to our national curriculum. So let's begin with it. Here we are with our learning objective for the discussion. So what we will going to do, first of all, we will going to discuss the structure of national curriculum for English language and science. Then our second objective is to find out the differences between the structure of national curriculum for English and science. Dear students, the first document that we'll be going to review is National Curriculum for English Language. First of all, we need to see it that this curriculum document for English language is guiding teachers of which grade. So this is a document that's actually guiding teachers who are teaching at the grade 1 till the grade 12. So all the teachers of English who are teaching whatever in grade 1 till grade 12, it is a guideline to all of them. How this guideline is structured, what it offers, how teachers can get benefit from it, and how it provides information in a comprehensive way to them, we will going to see it.
So that is actually the title page of Pakistan National Curriculum for English Language. We can drag in and see what next. It is actually divided by the Government of Pakistan, Ministry of Education, Islamabad. So if we give it a look to its table of content, we get a better picture in our mind that what this document is actually offering. So what it's offering in the section 1, it is basically giving us an introduction about the background, that why we need to teach English to our school children from the grade 1 till the grade 12. Then in the section 2, it will going to talk about some competencies, standards, benchmarks, and student learning outcome. What do they mean by competency? What exactly they mean by standard? What is benchmark and what are learning outcomes? This document will going to explain each and every component, and we will going to give a brief look to all of these stuff. Then in the section 3, this document is talking about student learning outcome, specifically in these 5 categories. Section 4, this curriculum document is guiding text type, themes, and sub-themes that will going to be a guideline for the text developers and definitely for the teachers. In the section 5, this curriculum document is guiding teachers that how they will going to teach English as a course to the students in the grade 1, 2, 3, 4 till 12. So what are the specific teaching methodologies they will going to take it up, and for teaching of language skills and for instruction strategies and how to use the supplementary material. Then the section 6, the curriculum document for English language is also guiding teachers that how to develop assessment for all children who are coming in the grade 1 till the grade 12. So let's go into it and see in detail that what exactly each and every chapter means by. The document is starting with the heading of preamble. And what this heading is talking about, it is talking about that this curriculum document for English language is actually a reference document for its various stakeholders. What it is stating that who are the various stakeholders who have their interest in this curriculum document. So first of all, definitely are the teachers and the learners. Then textbook writers can get a reference from it, reviewers, examiners, and so many other people. So first of all, the curriculum document will going to define its rationale for teaching English to the children of Pakistan for 12 years. Why it is important? The curriculum document is acknowledging the fact that our children actually are non-native speakers of English. So we need to move on and see how it is exfoliates. In the section 1 introduction, first of all, this document is talking about the background of proposing English in the school. Why the children of Pakistan who are in the grade 1 till the grade 12, they should study English. The key stuff, what they are talking about is that English is an international communication language. And most of our documents that are related to the policy or that are related to different subjects, research, they all are mostly available in English. If we want to get maximum benefit out of it, or we want to enhance our knowledge in a specific subject or in some other profession, we have to learn English and we have to know about the language so that we can read it out them and comprehend them and communicate it with the other community members. In the background, the curriculum document is acknowledging the fact that most of the children who come in the school, especially in the public school, they come from different socio-economic backgrounds and their parents have different level of education. And these are very related terms to the children's capabilities. Definitely not in every home parents are well educated where they can give material to the children that help them to develop English communication skills. So what they are doing, they are stating that the government of Pakistan is providing an equal opportunity to every child regardless of the fact that from which background
he or she is coming, or what is the level of their parental education. They're getting equal opportunity to learn English, so that if they learn English communication skills, there is a better job market for them in the future. So, after the background, the curriculum document is talking about the underlying philosophy of curriculum for English language, that is for grade 1 to 12. So, what is the underlying philosophy? So, it is actually not very hard to find it out. We need to read it a little, but we can take it from here. What it is saying, the curriculum document aims to serve a guide for teachers, learner, textbook developer, assessor, and this curriculum document uh, that has competencies and standard defined in the curriculum will provide a roadmap for development of both human and financial resources in a school for quality teaching learning of specifically English to all children in Pakistan. So what does exactly they mean by competencies and standards? Their curriculum document should define each and every term, what they are going to use in it, in an explicit way. So we see in the next page how they are defining it. In the section 2, the document is explicitly defining what do they mean by competencies, standard, benchmarks, and student learning outcome. What is the specific definition of competency? It is a probability that you also know about the meaning of competency, and maybe you have different definition, maybe I have different definition for competency, but we want to see here that what exactly the curriculum for English language have the specific definition for competency. What it is here a key learning area. So they are defining competency as a key learning area. Then they are defining standards, what they are. These define the competency by specifying broadly the knowledge, skills, and attitude that the student will acquire. How they will going to acquire by studying English, course outline in the form of textbooks, in the form of activities in between 12 years of schooling. Then benchmarks. The benchmarks further elaborate the standard, indicate what the student will accomplish at the end of each of the 5 developmental levels in order to meet the standards. Then there are student learning outcome, what they are. These are built on the descriptions of the benchmark and describe what the student will accomplish at the end of each grade. So here in a picture you can see what is at the top. At the top is the competency. Then after the competency, the standard are defining what is this competencies. Then there are benchmark who further defining what are the standards, and the learning outcome who actually exfoliating in a detailed manner what actually these all things are, specifically the benchmarks. So the national curriculum of Pakistan for English language is basically focusing on 5 competencies. The purpose of all teaching learning of English in our school system is over here. Is to develop these 5 competencies in the children. The children, once they enter in grade 1, teachers start developing these competencies into them, and when they exit at the grade 12, they must have developed these competencies to that specific level. So what is the competency 1? Reading and thinking skill, writing skills, oral communication skill, formal and lexical aspect of language, appropriate, ethical, and social development. So we need to move on and see further that how this competency is exfoliating and defining itself, what exactly it is. So we have the first competency, that is reading and thinking skill. What is exactly the mean by reading and thinking skills? So they are defining in the standard 1 exactly what they want a student to do in the competency 1. All students will search for, discover, understand a variety of text type to task which require multiple reading and thinking strategy for comprehension, fluency, and enjoyment. So this is the first definition of reading and thinking. What exactly or more they mean by it? All students will read and analyze literacy text to seek information, ideas, enjoyment, and relate their own experiences to those of common humanity as depicted in the literature. So these 2 standards actually
in a broad manner defining what exactly the meaning of competency 1, what a student should do in reading and thinking skills. And then there is a rationale. And this document will help us to see most of the stuff like the competency, standard, and benchmarks all together. So you can see over there at the top, this is competency 1, reading and thinking skills. So teachers need to develop this competency 1 as a child enter in grade 1. And they work on this child in the grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 to develop this competency at a simple and lower level and take it to the complex and more sophisticated level. So this competency is again defined here in the form of a standard 1 that children need to go through a variety of texts. They need to read it out so that they can comprehend multiple documents of English language, and they should develop a fluency in reading. And what they should do else, they love and enjoy English literature. How teachers will going to develop this competency in the student? So here are the benchmarks. Benchmarks are providing teachers that how you need to develop. So what benchmark is doing, it is actually divided the grades for teachers. For example, the first division or the category is grade 1 and 2, then 3 to 5, then 6 to 8, 9, 10, and 11 and 12. So the first competency, how this will going to be developed in grade 1 and 2, what teacher need to do is, definitely when a child come in a grade 1, children don't have reading skill or fluent reading skill. So what teacher should do, teacher need to make them ready for coming readings. And this is known as reading readiness strategies. How they do it, they provide them simple story pictorial books that have not more than one sentence or one word. So here it is. Once the children will going to complete their grade 2, they should be ready for the further reading stuff. Then how they should recognize different words and sentences as meaningful unit of expression and paragraph as graphical units of expression. Then the same benchmark is actually getting more complex in grade 3. So teachers need to develop activities, lesson plans for the grade 3 to 5 student, where at the end of the 5th grade, all the student must identify the graphs, silent letters, and inflections in words, comprehend words. They must make sentences and paragraph as meaningful units of expression. So there is just one competency, reading and thinking. And this is actually what benchmark is doing. It is guiding teacher that how from the very simple level to the difficult level teacher need to take it. In the grade 1 and 2, this benchmark is actually at a very simple level. Once a child finish its grade 2, he or she should know all of this stuff. And then once a child have done its grade 5, he or she must have the skills and knowledge about all of these stuff, so that this provides a scaffold, a foundation on which the grade 6 and 8 stuff will going to be come on. Here are the student learning outcomes. So again, here we can see competency 1, reading and thinking skill, and we are looking at the standard 1, that was that students should read out different kind of texts so that their thinking strategies for comprehension become expanded. They become fluent in reading and enjoy English literature. So what student learning outcome is telling about after the benchmark? It is telling the teacher that after completing grade 1, what kind of knowledge, skills, and attitude should be developed in students. So for example, they are like this way: hold, open, and turn pages of a book correctly. After completing a grade 1, a child should know how to hold an English book, where to open, how to turn the pages of the book in a right manner, and that is, English runs from left to right, top to bottom. They can understand that from what side English reading text actually started. Then recognize shapes of letter,
similar and different in print, color, and in tactile forms. Articulate, identify and match capital and smaller letter, and so on. So at the end of the grade one, a grade one student should know all of this stuff and should practice all of this stuff. Just take an example. If there is a student who is doing all of this stuff, all of the learning outcome he or she achieved, and you develop an assessment for that student and that student got full marks in it, what does it mean by? It means by that student is ready to promote it to the grade 2. Student learning outcome is actually a guideline for the teacher that how she will going to plan out her academic year, what she will going to teach in every class, what kind of specific skills and knowledge she's supposed to develop in a student, how she will going to make her formative and summative assessment, how she will come to know about it, that student have achieved these goals. So in the section 4, the curriculum for English language is actually explaining the type of texts, themes, and sub-themes that teacher will going to teach to the children. Okay, so let's check it out, what exactly they are. So here in the table, it is written down text type, that is narrative, expressive, reflective text, literary text. So what is the purpose for introducing these type of text to the student is to entertain, explore, imagine, enlighten, share experience, so as to get the reader involved in the story and character. So the focus is on literacy, creative, and aesthetic appeal. So how teacher will going to find out this text, from where they will going to get it? And this is something that very, very important that teachers need to know about it. So the curriculum document is also providing them the examples from where they get this type of a text, from story, poems, play script, biographies, anecdotes, diaries, journal, fantasy, adventure, science fiction stories. So this curriculum document is explaining that what kind of text teacher need to use in her or his teaching learning process and how she's supposed to take it. This table is providing a clear roadmap to textbook developer that how to develop books. This is a theme. So in this theme, what they can add on in the textbook of grade 1 and 2. So it is not only a very detailed, in-depth outline for the teachers that how they can plan their daily lesson plan and their full academic year for each grade, but for the textbook developer, that what kind of stories and topics they can put in the books. And then these textbooks become a resource for the teachers. Then in the section 5, the document is talking about that how teacher will going to develop these skills in the student, what teaching method they can use. So what they are talking about, teaching of language skills, they are explaining it all in a very detailed manner. Then what would going to be the best instructional strategies for developing these competency in the student. Here it is written down: input, discussion, role play, inquiry, cooperative learning, projects, presentation. Then what kind of supplementary material teachers can use. So it is defining and explaining each and everything to teacher, how to take on your class, how to take on your students grade wise, and what is expected in each grade. So the last section is the assessment. The curriculum for English language is also guiding teachers, English teachers, that how to assess the student's performance, how to know that the student have developed those knowledge and developed those competency and what extent they already been have and where they are standing. So it is telling it clearly that the assessment should be periodic, should be formative. Then there should be a summative exams, and it is telling it clearly, guiding the teacher that what are the characteristics of a good test. The most interesting part of this document is teacher training. What is acknowledging that teaching required training, and what you are doing is actually taking a training in a teacher training institution. So the curriculum document is explicitly defining each and every step for teacher.
Teacher need to know why they are teaching English to the grade 1 student or the 4 or the 10th. Teacher need to know what competency this curriculum document want us to develop in the student, how these competencies are defined in the standards, and then more defined in benchmarks, and then exfoliate more in detail in student learning outcome. Teacher need to know the student learning outcome for each grade. They need to know that at the end of each grade what students should know, learn, and do. Then teacher need to know from this document is what kind of text they can use, what are the themes and sub-themes, and how they need to teach, how they need to assess. So this is here our picture, or we are scanning our first curriculum document that is for English language. सेकंड करिकुलम जिसको हम देखने जा रहे हैं करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज के बाद, वो है नेशनल करिकुलम फॉर जर्नल साइंसेस। पहला ही फ़र्क नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में और जर्नल साइंसेस में आपको इसके पहले टाइटल पेज पे ही नज़र आ जाएगा। नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बनाया गया है फॉर ग्रेड 1 टिल ग्रेड 12 के स्टूडेंट के लिए। सो 12 साल की स्कूल एजुकेशन के तमाम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव उस करिकुलम डॉक्यूमेंट में बता दिए गए हैं। लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि हमारा नेशनल करिकुलम फॉर जर्नल साइंसेस जो है वो ग्रेड 4 से लेके 8 तक के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इससे फर्दर ग्रेड्स में जो भी साइंस का करिकुलम पढ़ाया जाएगा उसके लिए अदर करिकुलम डॉक्यूमेंट मौजूद है। सबसे पहला डिफरेंस हमें यहीं से नज़र आ जाता है कि ये चौथी जमात से लेके 8वीं जमात तक के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसे गाइड कर रहा है। अगला जो डिफरेंस आप देख सकते हैं वो डेफिनेटली आपको नज़र आएगा इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में रैशनल दिया गया था कि हमें अंग्रेज़ी क्यों पढ़ानी चाहिए ग्रेड 1 से लेके 12वीं जमात तक के बच्चों को, और उस अंग्रेज़ी को पढ़ने के बाद उन बच्चों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जॉब में क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे और इस दुनिया में अंग्रेज़ी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब हम साइंस पे आते हैं तो यहाँ साइंस का रैशनल होगा, यहाँ अंग्रेज़ी का रैशनल नहीं होगा। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, जब आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे और अगर आप इसको पढ़ना चाहें एक्सटेंसिवली तो हम इसकी 2-4 लाइनें पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। मैं इसको यहाँ से पढ़ रही हूँ। द एमर्जेंस ऑफ अ हाईली कॉम्पिटिटिव इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल इकोनॉमी, रैपिड टेक्निकल innovation, growing knowledge base will continue to have a profound impact on people life. Advancement in science technology are playing an increasingly significant role in everyday life. Therefore, science education will be a key element in developing science literacy in building a strong future for Pakistan young generation. अगर हम इसका पहला पैराग्राफ ही पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इसका बुनियादी मकसद क्या है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो साइंस की फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं, जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं, जो इन्वायरमेंटल साइंसेस की फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए, ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए। डेफिनेटली साइंस करिकुलम के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हैं लैंग्वेज करिकुलम से। अगर हम इसको आगे ड्रैग ऑन करें तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़। जैसे कि आपने देखा कि करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी बात करता है गोल्स की सबसे पहले। तो आपका साइंस का करिकुलम भी अपने गोल्स की बात करता है और वो बताता है कि जी हमारे स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं और हमारे ओवरऑल गोल्स क्या हैं। जब ये अपने गोल्स को डिस्कस कर लेता है तो देन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। हम यहाँ देख सकते हैं कि एम्स क्या हैं इस करिकुलम के, क्या मकसद है चौथी जमात से लेकर 8वीं जमात तक के बच्चों को साइंस पढ़ाने का। तो इस मकसद को उन्होंने ओवर आर्च किया एक सेंटेंस में, द करिकुलम एम्स टू प्रमोट साइंटिफिक लिटरेसी अमंग द स्टूडेंट। कैसे? देन ये डॉक्यूमेंट उसको डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बाय हेल्पिंग स्टूडेंट टू डेवलप नॉलेज एंड अ कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग फिजिकल, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट एंड देयर आर सो मैनी अदर्स। हम इसको देख सकते हैं क्या है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट बात कर रहा है कि इस करिकुलम डॉक्यूमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्या हैं जी मेन ऑब्जेक्टिव? हम पहले 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। एम्फसाइज साइंटिफिक लिटरेसी फॉर ऑल स्टूडेंट, promote inquiry based and student centered science education।
अब ये जो इन्होंने टर्म्स यूज़ की हैं, इंक्वायरी बेस एंड स्टूडेंट सेंटर, हो सकता है कि इसकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस मौजूद हों और डिफरेंट हो, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती हों। इंक्वायरी बेस का जो मीनिंग है या डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हो सकती है, मुताला पाकिस्तान, हिस्ट्री या इस्लामियत पढ़ने के लिए, और वो मुख्तलिफ हो सकती है जब हम उसे साइंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इस डॉक्यूमेंट को बताना चाहिए कि व्हाट डज़ इट मीन बाय इंक्वायरी बेस। देखते हैं कि आगे क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है इस डेफिनेशन को, ताकि हम समझ सकें कि ये डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली क्या चाहता है। जब हम इसके चैप्टर 2 के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले ही इस करिकुलम डॉक्यूमेंट ने उन तमाम चीज़ों को एक्सटेंसिवली डिफ़ाइन किया है, उन तमाम टर्म्स को जिसको ये करिकुलम डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहली टर्म क्या थी? इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम। सबसे पहले हमारा नेशनल करिकुलम फॉर साइंस चैप्टर 2 में एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम से क्या मतलब है। सो हम इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं फ्रॉम हियर. Inquiry-based approaches to science education focus on student-constructed learning as opposed to teachers-transmitted information. An inquiry-based curriculum literally dictates inquiry approaches in teaching. If the development and enhancement of a student's ability to think scientifically, critically, and creatively is an expected outcome. So, अगर आप याद करें करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके अंदर भी इनमें से चंद अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। वो क्या थे? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट में बहुत सी चीज़ें सिमिलर भी हैं, और उनमें क्या है? मेन ओवर आर्चिंग गोल्स एंड अप्रोच ऑफ डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेकिंग स्टूडेंट मोर क्रिएटिव। मज़ीद जब आप इस डॉक्यूमेंट को आगे चेक करेंगे तो उन्होंने इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच क्या होती है और कैसे वो डिफरेंट है ट्रेडिशनल अप्रोच से इन द फ्रेमवर्क ऑफ थियरी। कैसे स्टूडेंट्स जो हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम में एक्ट करते हैं और इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम में एक्ट करेंगे। स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी आउटकम में, ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होती थी, इंक्वायरी बेस्ड में क्या होगी, स्टूडेंट का रोल क्या होगा, करिकुलम के गोल्स कैसे दिखेंगे, और टीचर का रोल क्या था ट्रेडिशनल क्लासरूम में। और अब जब नई क्लासरूम बन रही है नई फ़िलासफ़ी की बेस पे, इंक्वायरी बेस पे, तो वहाँ टीचर क्या करेगा? क्या वो वहाँ डायरेक्टर और ट्रांसमीटर होगा या गाइड और फैसिलिटेटर होगा? सो उन्होंने इंक्वायरी बेस अप्रोच को एक एक्सटेंसिव तरीके से डिफ़ाइन किया है और कि वो मल्टीपल रोल में कैसी दिखेगी। जब हम आगे जाते हैं तो हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट दोबारा एक एक टर्म डिफ़ाइन करता है कि उनका मकसद क्या है साइंटिफिक इंक्वायरी से। सो उनका क्या मकसद है? क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, इन्फरिंग, प्रिडिक्टिंग, measuring, hypothesizing, classifying, designing experiment, collecting data, analyzing data, and interpreting data, and so many other things. Problem solving से उनका क्या मतलब है? Proposing, creating, and testing of prototypes, products, and techniques. To propose, perform, and evaluate solution to problem solving or technical task or question. So जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक एक टर्म को हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट सबसे पहले डिफ़ाइन कर रहा है। उन तमाम टर्म्स को जिसकी बेस के ऊपर ये करिकुलम डॉक्यूमेंट बना है, उन तमाम टर्म्स को जो कि आगे जाके इस्तेमाल होने वाली हैं, ताकि पढ़ने वाला सबसे पहले समझ जाए कि इन टर्म्स, इन जॉगन्स का इस करिकुलम डॉक्यूमेंट के फ्रेमवर्क में क्या मतलब है, क्या स्पेसिफिकली डेफिनेशन है। देन करिकुलम डॉक्यूमेंट जो है वो बता रहा है स्पेसिफिकली कि साइंस करिकुलम में डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, और वो मतलब ये है कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, जनरेशन ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन और कोर्स ऑफ एक्शन, courses of action, evaluation of the alternatives, and a thoughtful decision based on the information available. So this is the specific meaning of decision making in this curriculum for science. जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है नज़र आती हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो इन एक्सप्लेनेशन के ऊपर बेस्ड कर रहा है। दैन हमें एक और मैप नज़र आता है, और ये मैप क्या है? इट्स अ कंसेप्चुअल मैप फॉर करिकुलम आउटकम, कि जब बच्चे इस करिकुलम को पढ़ लेंगे तो क्या क्या चीज़ें वो सीख जाएंगे, किस किस किस्म के उनके अंदर नॉलेज
स्किल्स और एटीट्यूड्स डेवलप हो जाएंगे. तो उसका इन्होंने कंसेप्चुअल मैप बनाया है और उस मैप में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो यू कैन सी द मैप ओवर हियर. सो ये करिकुलम डॉक्यूमेंट चाहता है कि बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स पैदा हों. किसके लिए? लाइफ साइंसेस के लिए, स्पेसिफिकली फिजिकल साइंसेस के लिए, अर्थ और स्पेस साइंस के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं ग्रेड 4, 5, 6, 7, 8 की, उनमें साइंसेस के ये 3 मेजर एरियाज डिस्कस होने जा रहे हैं और टीचर साइंसेस के ये 3 मेजर एरियाज चौथी से लेके 8वीं तक पढ़ाएंगे और इन्हीं 3 साइंस के मेजर एरिया से रिलेटेड बच्चों में स्किल्स डेवलप करेंगे. कौन कौन सी? साइंटिफिक इंक्वायरी की, इनिशियलाइजिंग एंड प्लानिंग की, परफॉर्मिंग एंड रिकॉर्डिंग की, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग की और कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क की. और इन 3 साइंस के एरियाज को पढ़ाते हुए करिकुलम ये कह रहा है कि बच्चों में ये एटीट्यूड्स आपको डेवलप करने हैं. इनको पढ़ाना शुरू करना है चौथी से और कभी डेवलप हो जाना चाहिए 8वीं जमात तक. बच्चों में ये एटीट्यूड्स डेवलप होने चाहिए. क्या? सबसे पहले कि वो अप्रिशिएट कर सकें कि साइंस क्या है, उनका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो सके और वो साइंटिफिक इंक्वायरी कर सकें, वो एक दूसरे के साथ और डिफरेंट किस्म के साइंस से रिलेटेड लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकें, स्टूवर्डशिप हो सके और सेफ्टी को समझ सकें. हमारे पास अगला इनका चैप्टर आ जाता है करिकुलम फॉर द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग स्ट्रैंड्स, कंटेंट, स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क. सो आपने स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को देखा होगा करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में भी. सो अब सबसे पहले करेगा क्या ये डॉक्यूमेंट, कैसे बताएगा कि हमारे लर्निंग स्ट्रैंड क्या है, हम क्या चीज़ें साइंस में जमात चौथी से लेके जमात 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और फिर कैसे उन्होंने इन साइंस के स्ट्रैंड्स को कंटेंट, स्टैंडर्ड्स में, बेंचमार्क्स में और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में डिवाइड किया हुआ है. जब हम आगे बढ़ेंगे तो कंटेंट स्ट्रैंड्स को और एक्सप्लिसिट तरीके से और डिटेल से उन्होंने डिफ़ाइन किया गया है कि लाइफ साइंस से उनका क्या मतलब है. और लाइफ साइंस इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी डोमेन है और स्पेसिफिकली हमारा जो करिकुलम है वो चौथी से 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए क्या चाहता है कि कौन कौन से टॉपिक लाइफ साइंस के वो पढ़ें. सो वो क्या करेंगे इसको हम देखते हैं. लाइफ साइंस को सबसे पहले डिफाइन किया है कि वो क्या है. स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग्स. द सेम वे दूसरा जो इनका कंटेंट स्ट्रैंड है जिसके ऊपर बच्चों ने पढ़ना है चौथी से लेकर 8वीं तक, वो है फिजिकल साइंस और तीसरा है अर्थ एंड स्पेस साइंस. और तीनों को उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है कि ये है क्या. Then they talk about कि student learning outcome specifically क्या है, SLOs and benchmark क्या हैं. और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे कि ये आपने करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखी होंगी और वहाँ भी इनकी डेफिनेशंस देखी होंगी what exactly they mean by that. Then हमारे चौथे चैप्टर में करिकुलम फॉर साइंस के आ जाता है कंटेंट, स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क. और फिर आपको पता चलता है कि सबसे पहला स्ट्रैंड क्या था, लाइफ साइंस. क्या उसका रैशनल है, ये लिखा हुआ है. उसके बाद ये कैसा दिखेगा, इसके बेंचमार्क कैसे हैं. इनको हम यहाँ पढ़ने की जगह अब सीधे चले जाते हैं टेबल्स में और देखते हैं कि वहाँ कैसे डिफाइन किया गया है. टेबल्स में असल में देखना आसान हो जाता है और समझना आसान हो जाता है. सो चैप्टर नंबर 4 में इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, सेंटेंसेस, वर्ड्स इसको एक्सप्लेन किया गया है ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट को और स्किल्स को. देन हमारे पास आ जाता है इनका चैप्टर नंबर 5 और उसके अंदर क्लियरली बता दिया गया है कि ग्रेड वाइज लर्निंग यूनिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी. जैसे कि साइंस ग्रेड 4 से शुरू हो रही और लाइफ साइंस में ग्रेड 4 के बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे और उनको जब चौथी जमात को पढ़ लेंगे तो क्या क्या चीज़ें लाइफ साइंस के बारे में उन्हें पता चल जानी चाहिए. लेट्स से कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, फूड एंड हेल्थ, लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट. चौथी जमात के ख़त्म होने के साथ ही साइंस पढ़ने के बाद बच्चों को फिजिकल साइंस की इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. क्या? मैटर एंड इट्स स्टेट्स, हीट एंड इट्स मेजरमेंट, force and machine, introduction to sound, investigating electricity and magnetism. The same way जब एक बच्चा चौथी जमात में साइंस पढ़ लेगा
اس کے بعد ارتھ اور اسپیس سائنس کے بارے میں اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ موومنٹ آف ارتھ کی کیا ڈیفینیشن ہے اور کیا کمپوننٹس اور ایلیمنٹس ہیں. تو اس طریقے سے جیسے جیسے یہ ڈاکیومنٹ پروسیڈ ہو رہا ہے یہ اپنے آپ کو بیسیکلی مور آبجیکٹیولی ایکسپلین کر رہا ہے تاکہ ٹیچر کے لیے آسان ہو جائے اسپیسیفکلی اس کو سمجھنا کہ اس نے گریڈ 4 میں کیا پڑھانا ہے اور وہ جو بھی سائنس کا ڈومین لے گی جیسے کہ لائف سائنس اس کا ٹوٹل اسکوپ کیا ہے, کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے. بالکل یہی میٹرکس ٹیچر کو گائیڈ کرے گا جب وہ اپنی فارمیٹیو اور سمیٹیو اسیسمنٹ بنائے گی کلاس روم کے اندر. وہ دیکھے گی کہ کیا بچے لائف سائنس کے کانسیپٹ کو اس لیول تک سمجھ چکے ہیں, کیا فزیکل سائنس کے یہ سارے کانسیپٹ ان کی سمجھ میں آ گئے ہیں, اور ارتھ اور اسپیس سائنس کے کانسیپٹ انہیں کس حد تک سمجھ آ گئے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں, کتنا آگے ہیں اور کتنا پیچھے ہیں. اس کے اوپر ان کی گریڈنگ ہوگی اور اس کے بعد اس سبجیکٹ میں پاس یا فیل ہونے کا جو ہے تعین کیا جا سکے گا اور بچے کی اگلی گریڈ میں پروموشن جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوگی. سو یہ ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمس ہیں کہ آپ کو کریکولم ڈاکیومنٹ میں بتا دیا گیا ہے کہ گریڈ 4 میں, گریڈ 5 میں, گریڈ 6 میں اسٹوڈنٹ نے ہر ڈومین کے اندر کون کون سے ٹاپک پڑھنے ہیں. سو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چیپٹر نمبر 6 پہ اور اس کا ٹائٹل ہے لرننگ کانٹینٹ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. بالکل ہم نے یہی لاسٹ چیپٹر کریکولم فار انگلش لینگویج میں دیکھا تھا. یہ چیپٹر اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ڈائریکٹلی ٹیچرس کے لیے ہوتے ہیں اور ٹیچرس کو ایگزیکٹلی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ڈے ٹو ڈے اپنی لیسن پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کو, اپنی کورس کو پورے اکیڈیمک ایئر میں کیسے اینولی ڈیوائڈ کرتے ہیں, پھر ٹرم وائز, پھر منتھلی, پھر ویکلی اور پھر ڈیلی, تاکہ انہیں سمجھ آ سکے کہ انہوں نے یہ پورا کورس ایک اکیڈیمک ایئر میں کیسے پڑھانا ہے. سو اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا ہے لرننگ کانٹینٹ اینڈ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کیا ہے, نالج اسکل ایٹیٹیوڈ اور ایس ٹی ایس سی سے ریلیٹڈ. سو یہ ہمارے پاس کانٹینٹ ہے اور یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے. سو ہم ان میں سے ایک دو کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ سمجھ آ سکے. انڈرسٹینڈنگ آر سیلف. سو انڈرسٹینڈنگ آر سیلف اگر کانٹینٹ ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ٹیچر نے پڑھانی ہے. نمبر 1 انٹروڈکشن آف ہیومن باڈی, میجر پارٹس اینڈ کامن ڈس آرڈرز. سو جب ٹیچر یہ کانٹینٹ پڑھا لے گا اسٹوڈنٹ کو تو اسٹوڈنٹ میں کون سی کیپیبلٹیز پیدا ہو جائیں گی. وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے گا اپنی باڈی کے میجر پارٹ کو, اسٹیٹ فنکشن آف میجر پارٹ آف دا باڈی, وہ بتا سکے گا کہ بونز اور مسل جو ہیں وہ کیسے اکٹھے کام کرتے ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے گا کامن ڈس آرڈر جو ہمارے جسم میں ہو سکتے ہیں بیکاز آف اینی کائنڈ آف ڈیزیزز, اور سجیسٹ کرے گا ویز ٹو کیپ پارٹ آف دیئر باڈی ہیلدی. سو جب ہم یہ تمام چیزیں بچوں کو پڑھا لیں گے تو بچوں کو یہ تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, یہ اسکلز, یہ لرننگ آؤٹ کمس ان میں ڈیولپ ہو جانے چاہیے, اور اسی پہ ٹیچر اپنا پیپر بناتا ہے, اسی پہ ٹیچر اپنے پورے اکیڈیمک ایئر کی پلاننگ کرتا ہے. سو دیٹس ہاؤ یہ کریکولم ڈاکیومنٹ ہر لرننگ کانٹینٹ کو ایکسٹینسولی ڈسکرائب کر رہا ہے کہ جب آپ یہ پڑھائیں گے تو بچوں میں آپ نے یہ کیپیبلٹیز بائی آل مین ڈیولپ کرنی ہیں کہ بچے اس کانٹینٹ کو اس لیول پہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. سو پورا یہ ڈاکیومنٹ آگے ون بائی ون تمام لرننگ کانٹینٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ اٹ ایلس ایٹ دا اینڈ. اینڈ دس از ٹیچنگ اینڈ لرننگ دا چیپٹر 7. سو کریکولم ڈاکیومنٹ ٹیچرس کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ تمام کانٹینٹ جو اوپر دیا گیا ہے اور وہ تمام کیپیبلٹیز جو بچوں میں کانٹینٹ پڑھنے کے بعد ڈیولپ ہوں گی, آخر آپ نے اس کو پڑھانا کیسے. تو یہ آپ کو پراپر گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ اس کو پڑھانے کا میتھڈ کیا ہوگا. سو ہم پہلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں, جس سینگ کے پروموٹنگ سائنٹیفک لٹریسی ان ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. یہ پرپز ہے, یہ کیسے اچیو ہوگا. یہ اس طریقے سے اچیو ہوگا کہ لیس ایمفسس کس پہ رکھنا ہے, مور ایمفسس پڑھاتے ہوئے کس پہ رکھنا ہے, اور کیا چیزیں انہانسنگ لرننگ ان سائنس کرنے کے لیے اور وہ کیسے کی جا سکتی ہیں. سو دس کریکولم ڈاکیومنٹ از ایکسٹینسولی گائیڈنگ ٹیچر کہ ہاؤ دے ول گوئنگ ٹو اچیو آل آف دیز گولز ان دیئر کلاس روم. سو کلاس روم کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کیا ہوں گی, اور کلاس روم کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے بعد انکوائری بیس سائنس لرننگ ہوتی کیا ہے. ٹیچرز جو ہیں انکوائری بیس سائنس لرننگ کو کیسے لے کے کلاس میں چلیں گے, کیسے انکوائریز کو انیشیٹ کریں گے, اور کیسے یہ نالج بیس سے ڈفرینٹ ہے.
دین اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ لرننگ ان اسٹوڈنٹ فوکسڈ کہ لرننگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ فوکسڈ کیسے ہے. سو دس کریکولم ڈاکیومنٹ از ایکسپلیننگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹو دا ٹیچر. سو لیٹس سی کہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 8 میں کیا ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے کریکولم فار انگلش لینگویج میں بھی یہی چیپٹرس دیکھے تھے. سب سے پہلے کہ ہم ریشنل دیکھ رہے تھے انٹروڈکشن میں کہ ہم انگلش کیوں پڑھانا چاہتے ہیں. سو ہم نے یہاں انٹروڈکشن میں دیکھا کہ ہم سائنس بچوں کو کیوں پڑھانا چاہتے ہیں. دین ہمارے کریکولم ڈاکیومنٹ فار انگلش لینگویج نے ایکسپلین کیا کہ اسپیسیفکلی انگلش میں کیا کمپیٹنسی ہیں جو بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ڈیولپ کرنا شروع ہوتے ہیں گریڈ 1 سے اور اس کو لے کے جاتے ہیں گریڈ 12 تک, اور آپ نے 5 کمپیٹنسی سیکھی. جبکہ ہم سائنس میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 سائنس کی ڈومینز ہیں جس کے اوپر یہ ڈاکیومنٹ فوکس کر رہا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ وہ تینوں ڈومینز انٹروڈیوس کروائی جائیں گریڈ 4 میں اور گریڈ 8 تک پڑھائی جائیں. پھر کیسے پڑھائی جائیں دونوں ڈاکیومنٹ میں بتایا گیا, اور سب سے امپورٹنٹ اور آخری چیز کیا تھی کہ اس کی اسیسمنٹ اور ایویلویشن کیسے کی جائے گی. ٹیچر کو کیسے پتہ چلے کہ جو اس نے ایک ایکڈیمک ایئر میں یہ تمام چیزیں پڑھائی ہیں کیا وہ تمام گولز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. تو اس کی ایکسپلینیشن اور اس کا کرائٹیریا آپ کے عموماً لاسٹ چیپٹر میں موجود ہوتا ہے. سو آبجیکٹیو آف اسیسمنٹ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ سائنس پرنسپل, کنڈکٹنگ سائنٹیفک انکوائری, اپلائنگ سائنس پرنسپل. سو یہ ڈاکیومنٹ اس طریقے سے ان ڈیٹیل ایک ایک کمپوننٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہے. سو جب آپ اس کو گو تھرو کریں گے تو اس میں ملٹیپل طریقے سے ان دا فارم آف ورڈس, پیراگرافس اور ان دا فارم آف گرافس اینڈ ٹیبلس ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کریکولم کا کیا مقصد ہے, بچوں نے 4 سے 8 تک کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کیا طریقوں سے پڑھنا ہے, کیا چیزیں ان کو ہر ڈومین میں سائنس کی آنی چاہیے, کرنے ہیں. سو ٹیچر کی پلاننگ اور انسٹرکشن کے لیے یہ ڈاکیومنٹ ایک فریم ورک, ایک گائیڈ لائن, ایک روڈ میپ پرووائڈ کرتا ہے. سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ کریکولم ڈاکیومنٹ ویری کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اسلامیات یا مطالعہ پاکستان یا اردو کا کریکولم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس کا روڈ میپ تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوگا, اس کا ریشنل ڈفرینٹ ہوگا, اور اس کے لرننگ آؤٹ کم آبجیکٹیوز اینڈ گولز بھی ڈفرینٹ ہوں گے. ایک چیز آپ کو یہاں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو کریکولم ڈاکیومنٹ ہے یہ سبجیکٹ سینٹرڈ ہے. سو ہر سبجیکٹ کا الگ الگ ہمارا نیشنل کریکولم موجود ہے, اور اس سے آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا کریکولم ڈاکیومنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ یہ کس فلاسفی میں ایمبیڈڈ ہوگا. لارجلی موسٹلی کریکولم ڈاکیومنٹ کسی ایک فلاسفی پہ اب بیس نہیں ہوتے. سو ہم اس کریکولم ڈاکیومنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا اسٹرکچر ہے دیٹ از ریئلزم, لیکن جو اس کی کانٹینٹ ہے اس میں پروگریسو اور پوسٹ ماڈرن کمپوننٹ بھی. ہم اپنی اگلی ڈسکشن کے اندر اس چیز کو ایکسٹینسولی ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اسکولس کے اندر نیشنل کریکولم کے علاوہ اور کون کون سے کریکولم اویلیبل ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس پبلک اسکولس بھی ہیں اور پرائیویٹ اسکولس ہیں, اور کچھ پرائیویٹ اسکولس میں ہمارا نیشنل کریکولم نہیں پڑھایا جاتا. وہ مختلف قسم کے کریکولم پڑھاتے ہیں, یا تو وہ کریکولم خود ڈیولپ کرتے ہیں یا وہ کوئی انٹرنیشنل کریکولم پڑھا رہے ہوتے ہیں. سو ہم اپنے نیکسٹ ڈسکشن میں کچھ انٹرنیشنل کریکولم کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا اسٹرکچر کیسا ہے, ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیو کیسے ہیں, کیسے ایک ہی ملک میں پڑھنے والے بچے, جو کچھ بچے پرائیویٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں اور کچھ بچے پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہیں, وہ 12 سال پڑھنے کے بعد ان میں کیا ڈفرینسز آتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا ڈفرینسز ان دا کریکولم. سو ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. If you have any question, put this question to your co-teachers. They definitely will going to answer you. Thank you so much.